Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, as you know, we are dealing with chapter number 12, that is symmetrical optics, and in this lecture we will discuss about lens terminology and power of a lens. Lens terminology means the terms that are related to lenses. स्टूडेंट्स, सेम ऐसी टर्म्स हमने मिरर के लिए भी डिस्कस की थी इन प्रीवियस लेक्चर्स, और वही टर्म्स हम लेंसेज के लिए भी यूज़ करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, जस्ट वॉच दिस वीडियो. Some general terms to identify the location of images. Optic center is a point on the axis of a lens such that any light ray passing through this point emerges without refraction. It is also known as the pole of the lens. As shown in the figure, O is called the optic center of the lens. Principal focus. Principal focus is a point on the axis of a lens. This is the point where a beam of light parallel to the principal axis, after getting refracted, meets in a convex lens or appears to meet when produced backwards in a concave lens. Principal foci occur on both sides of lenses. Principal focus is also known as the focal point. In the figure here, F1 and F2 are the two principal foci. In a convex lens, if an incident ray passes through a focus and its emergent ray passes parallel to the principal axis, then that focus is called the first principal focus. If an incident ray passes parallel to the principal axis and its emergent ray converges at a focus, then that focus is called the second principal focus. In a concave lens, if an incident ray is directed towards a focus and its emergent ray passes parallel to the principal axis, then that focus is called the first principal focus. If an incident ray passes parallel to the principal axis and its emergent ray appears to diverge from a focus, then that focus is called the second principal focus. The distance between the optic center and the focal point is called the focal length. Here the focal length has been represented as OF1 and OF2. I hope students it was very helpful video to understand the terms related to lenses practically. Well, now we are going to discuss the power of a lens. What is meant by power of a lens? The power of a lens is the reciprocal of its focal length, that is in meters. We measure it in meters. अगर हमने मेजर करना हो कि किसी लेंस की पावर क्या है, तो जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेम इसी तरह जो पावर ऑफ लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, और जो फोकल लेंथ हम मेजर करेंगे वो मीटर्स में करेंगे. जबकि ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो डायोप्टर है, जिसे कैपिटल डी से शो किया जाता है. 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर. अगर एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर, तो उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर. द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज़ नेगेटिव. अब इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, जबकि कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें रेस खुद ब खुद एक फोकस पॉइंट पर मीट करती हैं, जबकि कॉन्केव लेंस में रेस डाइवर्ज होती हैं. डायोप्टर आर हैंडी टू यूज़ बिकॉज if two thin lenses are placed side by side, the total power is simply the sum of the individual powers. डायोप्टर को यूज़ करना बहुत इजी है. अगर दो लेंसेज को हम साइड बाय साइड प्लेस करेंगे तो दोनों की पावर सिंपली प्लस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर एक लेंस की पावर हमारे पास 2 डायोप्टर है और दूसरे की 0.35 है, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास 2.35 डायोप्टर्स आएगा. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क. Question number 12.12 is define the following terms applied to a lens. Number 1 is principal axis,
N2 is optical center and 3 is focal length. स्टूडेंट्स रिव्यू क्वेश्चन 12.13 कल हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. 12.19 इज डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड इट्स यूनिट. स्टूडेंट्स, do it properly. If you have any query, you can ask me. Take care. Allah Hafiz.